Hello and welcome to Unacademy, and this is our channel Unacademy Cat. Very good morning to all the learners of Unacademy and welcome you all to a brand new session of the Hindu editorial analysis session, guys. Today is the last day for the month of August. What a month we've had. काफी कुछ अच्छे sessions किए हैं हमने इस month में, तो hopefully we will carry it out in the next month also. तो चलिए guys, August month का आखिरी editorial session शुरू करते हैं हम लोग without wasting any time. Hey Shipra, very good morning. Hi Parveen, good morning to you also and welcome to the session. So guys, all the people who are going to be here for the very first time, I am Advocate Rushikesh Kate and I will be guiding you for your GK and current affairs section for various entrance exam that goes for ZAT, IFT, CMAT and particularly TISS. So this is the channel where I will be coming live two times in a day, guys. One is 11 a.m. जहाँ पर हम लोग editorial analysis का class करेंगे. We will do the editorial analysis class and one is 7 p.m. जहाँ पर आज हम लोग शाम में miscellaneous static GK का quiz करने वाले हैं. We are going to do a miscellaneous static GK quiz today in the 7 p.m. session. So hopefully you guys will join me at 7 p.m. also. तो गाइस अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इसमें आपको लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट अनलिमिटेड एक्सेस एंड अनस्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं बट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में यू गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस अलोंग विद दैट यू गेट पर्सनल गाइडेंस स्टडी प्लानर स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड personalized test analysis with the iconic subscription. So go for the subscription, guys. The 1 year subscription plan for plus goes for 22,550 rupees. And जो लोग कैट 2022 को टारगेट करेंगे, you guys should go for the 2 year subscription plan that goes for 32,800 rupees for plus, guys. Similarly, for iconic, the 1 year subscription plan goes for 39,500 rupees and the 2 years for iconic goes for 59,999. And do not forget to use this code RUSHI. That will give you an additional 10% discount on all your subscription, guys. Also guys, नए batches शुरू हो रहे हैं. New batches are going to start up from 28th of August and 1st of September. So you know the educator code already. Subscribe to the Plus and Iconic platform today. Enroll to these batches and enhance your learning only with an academy. Okay. चलो guys, session को शुरू करते हैं. Now let us start with the session. The title of this editorial is very clear, guys. आज का जो title है इस editorial का absolutely clear है. It tells about it is going to talk about the America's Asia policy. Okay, America का जो Asia policy है after the exit after their exit from Afghanistan. Now what is going to be the new role or what is going to be the strategic step America is going to take in order to have their presence into the Indo-Pacific region. Okay, तो उसके बारे में आज का ये editorial है. So the title is very clear, guys. We don't need a general interpretation of the title today because it clearly states that the editorial is going to be about America and their policy with respect to Asia. Then two, let's have a look on the headline of this editorial, guys. इस editorial का headline check out करते हैं. That says the US must push for a rule-based international order despite Afghan debacle. Okay, despite Afghan debacle. तो debacle का मतलब है a problem. Okay, एक issue जो हो गया है, एक problem जो हो गया है उसे debacle कहते हैं. So the headline says the US must push for rules-based international order despite Afghan debacle. Okay. Hey Kavya, very good morning. Welcome to this session. So the headline also clearly states, guys, what should be the next step for the United States. Okay, United States का क्या step होना चाहिए in the international order, even there was an issue or even there was a problem in Afghanistan. Now let's have a look on what this entire editorial says. ये पूरा editorial क्या कहता है हम लोग देखते हैं. Hey Shruti, good morning. Welcome to this session. So President Joe Biden, okay, President Joe Biden, that is Joe Biden is the POTUS. POTUS का मतलब होता है President of the United States. Okay, so President Joe Biden has found himself in the uncomfortable position of facing not only the expected criticism from the Republicans for his country's hasty botched exit from Afghanistan. Okay, now पहला ये जो लाइन है या फिर पहला जो स्टेटमेंट है गाइस,
इट स्टेट्स दी ऑब्वियस ओके। तो ये एक स्टेट के बारे में बताता है, ये एक सिचुएशन के बारे में बताता है दैट व्हाट जो बाइडन इज गोइंग टू फेस, ही इज गोइंग टू फेस एक्सपेक्टेड क्रिटिसिज्म ओके। एक्सपेक्टेड क्रिटिसिज्म है फ्रॉम whom he is going to face expected criticism from the opposition okay। there are two major political parties in America okay। अमेरिका में दो मेजर political parties है। one is the Democrats from which Joe Biden belongs to and another one is the Republicans from which Donald Trump belong to okay। तो रिपब्लिकन से तो हार्श क्रिटिसिज्म आने ही वाला है। फॉर किस चीज के लिए, फॉर व्हाट रीजन ही इज गोइंग टू बी क्रिटिसाइज, फॉर हिज कंट्रीज हैस्टी एंड बॉच्ड एग्जिट ओके। हैस्टी का मतलब होता है एकदम गड़बड़ में ओके। गड़बड़, यू डू इट इन अ हरी, उसे हैस्टी कहते हैं ओके। हम एग्जाम के पहले रिवीजन की जो बुक होती है हमको, उसे हम जल्दी 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 देखते हैं ना कि कौन से वर्ड्स है, कौन से इंफॉर्मेशन है, कौन से क्वेश्चंस है। तो वी रीड इट इन अ वेरी हैस्टी मैनर, बहुत हरी में या फिर बहुत गड़बड़ में हम लोग उसे पढ़ते हैं। एंड बॉच्ड, बॉच्ड का मतलब होता है केयरलेस, एब्सोल्युटली केयरलेस, विच इज बीन कैरिड आउट, विच इज अ बैड एग्जीक्यूशन, जिसमें बिल्कुल भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया होगा या फिर एकदम रेकलेसली उसे कैरी आउट किया होगा, उसे बॉच्ड कहते हैं ओके। दैट इज कॉल्ड एज बॉच्ड। हे अविनाश, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। So for what purpose Joe Biden is going to be criticized from the Republican? For his hasty and botched exit from Afghanistan. इसके लिए रिपब्लिक क्रिटिसाइज करने वाले हैं। But also bricks bat, okay? But also brick bats from within the Democratic Party and among the broader American public. तो सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिकन से ही उसको उनको क्रिटिसिज्म नहीं आने वाला है। He is going to be criticized by the brick bat विच आर विद इन द डेमोक्रेटिक पार्टी। उन्हीं के पार्टी में से कोई लोग भी उनको क्रिटिसाइज करेंगे। एंड ऑल्सो ऑन द ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव ओके, सिंस अमेरिका इज द डेमोक्रेसी, द पब्लिक ओपिनियन मैटर्स देयर, सो इवन द पीपल आर गोइंग टू क्रिटिसाइज हिम। ब्रिक बैट का मतलब होता है ब्रिक्स यूज्ड एज अ वेपन ओके। या फिर हम देखते हैं ना कार्टून्स में हम लोग देखते थे कि कोई एक ब्रिक उठाकर दूसरे कैरेक्टर पे फेंकते हैं। टॉम एंड जेरी के इसमें हम लोग ने काफी बार देखा है that Tom or Jerry he takes a bricks and throws at somebody. So that is the brick bats. Okay, brick bats. So bricks used to throw at someone, if you're used as a missile to hurt someone. Okay. So ultimately, the Democratic Party is not going to throw bricks at Joe Biden. They are going to verbally criticize him. Okay. So words are sometimes harder or harsher than any object or subject in particular. कोई एक छोटी सी चीज अगर कोई हमें कह जाता है तो वो भी हमें पत्थर से भी जोरदार लगती है। तो दिस इज व्हाट द एडिटर मेंट from this particular thing. So he is going to face criticism from three ways. He is going to be criticized by the Republicans, he is going to be criticized by the people within his party himself, and also on the broader perspective he will be criticized by the general American public okay। Now, the killing of at least 13 US troops and dozen of Afghan civilians in the bomb blast last week underscored the apparent lack of planning behind the withdrawal despite prior knowledge of its approaching deadline. Okay, now लास्ट वीक काबुल एयरपोर्ट के पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें 13 यूएस ट्रूप्स की जान गई एंड almost 100 civilians were killed. So this particularly shows that there was a lack of planning American side पर। हम लोग ये clearly हो जाता है, this is on the American side, that absolutely there was a lack of planning behind the withdrawal. Okay, जो बाइडन जी ने भले ही कह दिया होगा कि हम 9/11 से सारे 9/11 से पहले सारे ट्रूप्स को विड्रॉ कर देंगे, but then too there was lack of executing this thing even though they had a prior knowledge okay। उनके पास था कि 11 सितंबर हमारे लिए डेडलाइन है, फिर भी हैस्टिली एकदम केयरलेसली उन्होंने इस चीज को एग्जीक्यूट किया है ओके। the chaotic violent scenes at Kabul airport undergirded by the deep irony of Taliban's unchallenged takeover of Kabul and the Afghan territories have also no doubt stung US policymakers. Okay,
तो द सिनेरियो दैट वी हैव सीन, जो सिनेरियो है काबुल एयरपोर्ट के पास, पूरा केओस है, पीपल आर running behind the airplanes, they desperately want to leave the country, so they were requesting the officials to take their children also. Recently a lot of pictures with kids being handing over to the military personnel, these went viral. फिर पेंटागन और व्हाइट हाउस के भी स्पोक्स पर्सन ने उसके ऊपर स्टेटमेंट किया कि दिस वाज एन humanitarian act because the child was not healthy. He was treated in the he was treated by the US Marine doctors and then handed over back to the parents. So ये जो chaotic situation है, ये जो violent scenes है काबुल एयरपोर्ट के पास, which is supported अंडर गाइडेड का मतलब क्या होता है, इट्स गिवन अ सपोर्ट, ओके, किसी चीज को हम एकदम से दोनों हाथ से सपोर्ट देते हैं, उसे अंडर गिर्डेड कहते हैं. बाय द डीप आयरनी ऑफ तालिबान अनचैलेंज टेक ओवर, ओके, तालिबान का जो टेक ओवर था काबुल में, इट वाज विदाउट एनी कंटेस्ट. मतलब उन्होंने अपने ही स्पीड से, अपने ही एग्रेशन से अफगानिस्तान के प्रोविंसेस के ऊपर कंट्रोल किया है. Now, this situation has actually left the US policymakers uh, uh, clueless. Okay, clueless रख दिया है. So they are stung, they are in shock कि इतना सब कुछ हो गया and probably we couldn't do anything. Especially, okay, especially over comparison to Saigon in 1975. Saigon is the biggest city in Vietnam. Okay, Vietnam का सबसे बड़ा city है Saigon. तो US was also इन अ वेरी लॉन्ग टाइम वॉर विथ वियतनाम. ओके, वियतनाम के साथ भी यूएस काफी टाइम तक वॉर में था. सो दिस द एडिटर इज एक्चुअली कंपेयरिंग दिस टू सिचुएशंस. ये दो सिचुएशन को एडिटर जो है वो कंपेयर कर रहे हैं कि साइगॉन वियतनाम वाला वॉर लाइक सिचुएशन और अफगानिस्तान वाला वॉर लाइक सिचुएशन, which particularly has left the US policymakers. Policymakers कौन है? The people who sit in the White House. These are the policymakers for USA. So they have been stung. They are in shock of all these events that have taken place over a period of time. Hi Gunjan, good morning. Welcome to this session. Now, how can Mr. Biden now hope to sell the bigger picture of Washington's engagement in South Asia region to his domestic political constituents in a way that limits the reputational damage to the White House? Now, of course, इतना इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हुआ है, so that and Joe Biden is being criticized on multiple fronts. Okay, डोमेस्टिक फ्रंट, रीजनल फ्रंट, इंटरनेशनल फोरम पे भी काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है अमेरिका की ये पॉलिसी का. तो ऑफ कोर्स दैट हैज पर्टिकुलरली सपोर्ट सम रेपुटेशनल डैमेज टू द व्हाइट हाउस को थोड़ा बहुत तो नेगेटिव इम्पैक्ट इसका समझ में आया ही होगा. Now, the bigger picture or the big question that is there in front of Joe Biden is how he's going to sell the Washington. Okay, Washington को वो कैसे convince करेंगे कि नहीं, even if we have pulled outside of Afghanistan, we are going to have a good relation or good bilateral relations with within the Asian country that are there. तो ये convince करना Washington को या फिर the government of USA or the policymakers who are sitting in the White House, it's going to be a difficult task for Joe Biden. This is what the editor wants to say from this particular line. Now, there is a call of action here. Okay, एक action होगा यहाँ पर. The first step will be, okay, how is he going to convince the White House? White House को कैसे convince करेंगे? Hey Purnima, Gunjan, Chaudhary, good morning. Welcome to the class. The first step will be at long last to shift the American policy paradigm. Okay, paradigm का मतलब होता है a particular pattern. Okay, एक particular pattern या फिर model जिसे हम लोग कहते हैं typical example of a pattern, that is called as a paradigm. Okay, so the first step will be at long last to shift the American policy pattern on Afghanistan from a boilerplate approach towards institution building to recognize the political complexities of governing a society where tribal and ethnic loyalties supersede western norms. Now देखो guys, ये थोड़ा सा difficult है समझने के लिए, but it's the hidden meaning is very simple. Okay, अब यहाँ पर देखो क्या कहा है एडिटर ने. He has said that
the Americans needs to have a shift in their paradigm. उनके पैटर्न में शिफ्ट होना चाहिए कि what kind of shift we need or what kind of change we need. They need to change their policy from a boilerplate approach. मतलब boilerplate approach मतलब एकदम emergency वाला, एकदम hastily, एकदम hurried वाला जो approach होता है उसे boilerplate approach कहते हैं. ओके कि जल्दी से एकदम उसको अप्रोच कर दो. From a boilerplate approach towards institution building. Okay, एक proper institution building का approach होना चाहिए which will recognize the complexities of governing a society. एक ऐसे society है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या फिर ट्राइबल एंड इथनिसिटी लॉयल्टी मतलब लोकल कल्चर रीजनलिज्म वहां पर ज्यादा डोमिनेंट है ओवर द वेस्टर्न नॉर्म्स. ओके, वेस्टर्न नॉर्म्स बहुत सारे देश जो है वेस्टर्न नॉर्म्स एक्सेप्ट कर चुके हैं, बट देयर आर लॉट मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु स्टिल प्रिजर्व और स्टिल abide themselves by the regional or cultural aspiration they have from their ancestor. तो ये एक अप्रोच अमेरिका ने अडॉप्ट करना चाहिए at this particular point of time. Hey Sakshi, good morning, welcome to the class. Or rational decision making by the government. In part, okay, in part this means not demonizing or cutting ties with the Taliban before they had an opportunity to settle into power and announce intention for अफगानिस्तान. इसका मतलब ये नहीं होता है कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ अमेरिका ने बिल्कुल टाइज बंद कर देने, टाइज खत्म कर देने चाहिए या फिर नॉट डेमोनाइजिंग द तालिबान बिफोर दे कुड एक्चुअली सेटल देमसेल्फ एज अ गवर्नमेंट and declare their plan for Afghanistan. अब Taliban, even though Taliban has taken over the provinces of Afghanistan, there is still a transition, right? अभी भी transition चल रहा है. Today, आज सुबह ही last US Marine लेफ्ट फ्रॉम अफगानिस्तान, पेंटागन ने उसका फोटो भी शेयर किया है. सो अल्टीमेटली ये ट्रांजिशन अभी खत्म नहीं हुआ है. इट्स स्टिल गोइंग टू टेक टाइम. नाउ दैट द अमेरिकन्स हैव लेफ्ट, द तालिबान सोल्जर्स हैव एंटर्ड इनटू काबुल एयरपोर्ट. तो अभी वो पूरे प्रोविंसेस के ऊपर दे आर गोइंग टू टेक कंट्रोल and decide ki what is going to be the future of Afghanistan. So till that time US should not break their ties or should not demonize the Taliban. So in order to understand कि इसका governance कैसे होगा and then they can take a step forward. There must also be a recognition of the role that third parties are going to play. Okay, अब अमेरिका का एग्जिस्टेंस और अमेरिका का डोमिनेंस इन दिस पर्टिकुलर रीजन इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड. तो तालिबान है, ओके, तालिबान का डोमिनेंस रहेगा, बट देयर आर गोइंग टू बी थर्ड पार्टीज आल्सो. थर्ड फैक्टर भी रहेगा इसमें, विच आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज ऑफ तालिबान, विच आर गोइंग टू मेक द सिचुएशन वर्स्ट और बेटर. एक तो वो अच्छा करेंगे या तो फिर बुरा करेंगे. एंड द थर्ड पार्टीज आर वेरी ऑब्वियस. ओके, काफी ऑब्वियस है थर्ड पार्टीज इसमें. इट इज गिवन इन द नेक्स्ट लाइन. That must include everything. Okay, now who are the third parties that are going to be included here? That must include everything from the Pakistani ISI shadowy dealings. Okay, shadowy dealing मतलब under the table dealing, immoral dealings उसे shadowy कहते हैं. Something of suspicion, something which is not morally correct, उसे shadowy कहते हैं. So ISI shadowy dealings through proxies. Okay, through proxies. Through proxies मतलब क्या? They are not on the front line, but they are backing somebody. हम लोग हिंदी में एक चीज हमेशा कहते हैं कि किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना. That is what is using as proxies means. Okay, so Pakistan's ISI is dealing through proxies such as Haqqani network. Okay, Haqqani network is the proxy that is used by the Pakistan, and China's relentless push for access to economic projects and India's civilizational and soft power links. तो थर्ड पार्टी कौन कौन है यहाँ पर? वन इज पाकिस्तान का प्रॉक्सी हक्कानी नेटवर्क, अनदर वन इज चाइना, एंड फोर्थ वन इज इंडिया. तो सब लोग अपने अपने हिसाब से दे आर गोइंग टू ट्राई टू टेक कंट्रोल ओवर द
situation, okay, or make the situation better. या तो it will turn out to be very good, or या तो it will be turn out to be extremely worse in this scenario that we are seeing. Okay, got it? Hey Binit, good morning, welcome to the class. So uh, this is the first part guys. Okay, ये पहला part है. समझ में आया है सब लोगों को? Everybody understood it? ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया? सुपरसीड, सुपरसीड का मतलब होता है टेक कंट्रोल, या फिर दे विल ऑलवेज विन ओवर समथिंग, उसे सुपरसीड कहते हैं. दैट्स कॉल्ड एज सुपरसीड. ओके, चलो. Okay, guys, the 20 MBA 2021 mock test marathon is now live on Unacademy. You get 2 full-length mock tests for CAT per week, 3 sectional tests for LRDI, QA, and VARC, 1 test each per week, 2 full-length mock tests for OMEDs per month, and detailed video analysis for all mocks and sectional test is now available with both Plus and Iconic subscription. The best pick for CAT and OMIDs is the 6 months iconic subscription, which you can get it for 25,800 rupees. So go for the subscription guys, and then whenever you go for the subscription, use the code RUSHI. That will give you an additional 10% discount on all your subscriptions. Okay. Chalo, time to conclude this editorial. Okay. Okay, okay. ठीक है. Guys, give me a minute. Let me take care of this thing. Okay, chalo. So let's conclude this editorial. Okay, in the big picture, okay, in the big picture, matlab on a larger picture, there is an unsettling question. Okay, there is an unsettling question for Washington to answer. एक unsettling question है Washington के लिए, which they are supposedly to answer. They cannot turn their back from this question. And what is that question? On whether in persisting with the Trump era promise to pull US troops out of Afghanistan, Mr. Biden will be able to reassure Asian allies and partners that the US will not also play a diminished strategic role in the broader Asia region. Okay, मतलब क्या क्वेश्चन था ये? अनसेटलिंग क्वेश्चन क्या था कि ट्रम्प के एरा में जो प्रॉमिस किया गया था that the US troops are going to be pulled out from Afghanistan, Mr. Biden will Mr. Biden be able to reassure the Asian allies and partners that USA will not only play a strategic role, okay, they will not also play a diminished strategic role. Diminished matlab कम strategic role in with respect to broader Asian region. Okay, ये एक unsettling question है which the Washington is supposedly to answer. Now, to an extent, okay, to an extent, the US Vice President Kamala Harris Singapore and Vietnam trip was aimed at assuaging, okay, assuaging. Assuage का मतलब होता है make it less intense, okay, बहुत कम intensity जिसको करना कहते हैं, उसे assuaging कहते हैं, which generally is an
unpleasant feeling. Okay, it's an unpleasant feeling. It's what is the meaning of the word assuage. Okay, was aimed at assuaging such concerns and shoring up enthusiasm for the rules based international order that has taken a beating. Okay, rule based international order जो है, international law already established है within the ambit of the United Nations, which every country has to be and every member country has to follow. तो कमला हैरिस जी का जो सिंगापुर और वियतनाम ट्रिप है रिसेंटली, दे मेजरली फोकस्ड ऑन addressing the concerns of the Asian countries of what US policies had with respect to Afghanistan, and they will be working more towards a rule based international order in the times to come. Yet, okay, yet unless Washington follows up such summit meetings with ground level engagement, for example, through the Quad. Okay, through the Quad. Now, who are the members of the Quad? हमने already current affairs के session में इसे पढ़ा हुआ है. That who are the members of Quad? It is America, Japan, Australia, and India. Okay, these are the four members of the Quad. So, through the Quad, or deeper bilateral initiatives with friendly democracies, including India, Asian powers will be hard pressed to assume anything other than Washington's indifference towards their interest. Okay, India, Japan, Australia, and America. Correct answer. Correct answer, Vaibhavi. So, guys, so ultimately, no matter whatever Americans try to do, okay, after the Afghanistan's exit, किसी भी एशियन एलाई के दिमाग में यही आएगा कि अमेरिका विल ऑलवेज work in their own interest. They will draw the policies or they will take an action when it is beneficial for them, unless they will not intervene. This is what is the common assumption that will come under uh, every country's mind. So they need to push they need to push it more further by working on the ground level. Okay, ground level पर कैसे work करेंगे? Through the quad formation and through the other bilateral initiatives with the फ्रेंडली इकोनॉमीज या फिर फ्रेंडली डेमोक्रेसी जो है जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है. ओके, थ्रू दैट वे. So the danger for the West of considerable blowback that could emerge thus are the least twofold. Okay, मतलब danger of the West of considerable blowback मतलब West का जो danger है for it to backfire it, ये दो चीजों में है. One is Afghanistan cyclical transition from Western occupied territory to abandoned nation and ultimately a bleeding ground for global terror outfits is well documented. एंड सेकेंड एक तो अफगानिस्तान रिलेटेड होगा ही होगा, जो एक वेस्टर्न ऑक्यूपाइड टेरिटरी था, बट नाउ दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ ग्राउंड जीरो फॉर ग्लोबल टेररिस्ट आउटफिट्स. ओके, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है. वेल डॉक्यूमेंटेड मतलब इट इज वेल ऑर्केस्ट्रेटेड. And second, China will be only too glad to step into the breach should any new spaces be ceded in the pecking order of regional hegemony in Asia. Okay, अब चाइना के लिए भी दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ये चाइना के लिए भी कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. तो जैसे ही यूएस गया है, नाउ चाइना विल स्टेप इनटू द ब्रीच एट द फर्स्ट प्लेस एंड कैप्चर न्यू स्पेसेस इन सीडेड. ओके, मतलब और जगह को वो कैप्चर करेगा इन द पैकिंग ऑर्डर ऑफ रीजनल हेजमनी. हेजमनी का मतलब होता है डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप ओवर द अदर. इट कैन बी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल ऑल्सो. ओके, हेजमनी का मतलब होता है डोमिनेंस. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड hegemony. Okay, so China will also try to create its hegemony in the region of Asia henceforth. Okay, got it? This is the entire editorial, guys. Okay, ये पूरा editorial है. समझ आ गया सब लोगों को? Everybody understood? चलो, everybody guys, has everybody understood this? चलो, great. These are the words that we
came across in this editorial. One is hasty. Okay, hasty, done with excessive speed or urgency. Botched, carried out badly or carelessly. Brickbat, piece of brick used as missile. And paradigm, a typical example or pattern or model. And assuage, an unpleasant feeling. Hegemony is dominance of one group over the others. Nice watch. Thank you, Gunjan. Thank you so much. Namrata, yes. Okay. चलो guys, now let's have a look on the questions. Okay, questions देखते हैं इस editorial के. Okay, let's have a look over the questions. But before that, guys, let me tell you about the special class features. Mind you, special classes are all free classes on Unacademy learning application. They you don't have to pay any money. आपको कोई भी पैसे नहीं भरना है to attend the special classes of Unacademy. इसमें आपको interactive live classes मिलते हैं by top educators of this country. You have the polls for the learners. We also have a raise the hand feature available on Unacademy now ताकि आपके सारे doubts educator clear कर सके. Never miss a class because you will be notified for all the upcoming classes, courses, and recommendations. You can even download the lecture notes from the application itself with and without annotation. And the best thing is you can watch your sessions anytime, anywhere from any of your devices. Okay. So, guys, join me from Monday to Saturday at 5 p.m. for TISNET 2022 daily GK update and quiz class every day on the Unacademy learning application. Mind you guys, special classes are absolutely free classes on the platform. You don't have to pay any kind of money. You just have to download the Unacademy learning application. वो भी एकदम फ्री है. उसके लिए भी आपको कोई पैसे नहीं भरने हैं. बस आपको while registering you have to use this code RUSHI Rushi ताकि आप मेरे सारे जितने भी फ्री क्लासेस है ऑल माय फ्री क्लासेस ऑन दी अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म आप उसे अनलिमिटेडली देख सकते हो. यू कैन वॉच इट अनलिमिटेडली ऑन दी अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म. ओके, चलो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई इज द पोटस लाइकली टू फेस एक्सपेक्टेड क्रिटिसिज्म? Why is the POTUS likely to face expected criticism? काव्या ने कहा बी, मित्तल ने कहा बी, श्रुति ने भी कहा बी. ऋतुजा बी, गुंजन बी, कृति बी, तनिषा. Hi Tanisha, good morning, welcome to the class. Kriti, good morning and welcome to the class. And that is the correct answer, guys, because of the careless execution of withdrawals of troops from Afghanistan. Okay, Diksha, good morning, welcome to the session. Next, what is the synonym of hasty? What is the synonym for hasty? What is the synonym for hasty? POTUS का मतलब होता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. POTUS means president of the US. ओके, गुंजन ने कहा ए, तनिषा ने कहा बी, मित्र दीक्षा सी, काव्या सी. गाइस, हैस्टी का मतलब क्या होता है? हैस्टी इज समथिंग विच यू डू हरीडली, जो आप गड़बड़ में करते हो. लीजर मतलब क्या? बड़े आराम से, है ना? तो फिर ये सिनोनिम कैसे हुआ? हाउ इज इट सिनोनिम? स्लगिश भी मतलब जो चीज स्लोली करता है. स्लगिश का मतलब भी क्या है? स्लोली. यू स्लग, यू आर नॉट प्रॉम्प्ट और यू आर नॉट ऑन टाइम. यू डू, जनरली हम लोग असाइनमेंट जब करते हैं कॉलेज के, वी डू इट स्लगिशली, लेजी वे में हम लोग उसको करते हैं. एक लाइन में हम 5 वर्ड्स लिखते हैं
या फिर डायग्राम बहुत बड़ा कर देंगे. So that is sluggish way of doing an assignment, a lazy way of doing it assignment. The correct answer is C, impetus. Okay, impetus मतलब जल्दी जल्दी करना. Leisure, sluggish, lingering, these are all antonyms. ये सारे hasty के antonyms है. क्या कर रहे हो गाइस? यहाँ पर क्लियरली इतना मैंने 24 फॉन्ट साइज रखा है, फिर भी तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो गाइस. चलो नेक्स्ट. सिनोनिम ऑफ पैराडिगम. सिनोनिम ऑफ पैराडिगम. सिनोनिम ऑफ पैराडिगम. पैराडिगम का मतलब क्या होता है? इट्स अ पैटर्न और ए मॉडल. पैटर्न और ए मॉडल. सो प्रोटोटाइप इज ए करेक्ट आंसर. Blank, plain, misadjust, these are again what? These are all antonyms to paradigm. Okay, paradigm को ये सारे antonyms है. Next question. Now antonym for assuage. Antonym for assuage. Antonym for assuage. Guys, assuage का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज एन अनप्लेजेंट फीलिंग. ओके, मतलब लेस इंटेंस, उसका इंटेंसिटी एकदम कम कर देना है. ओके, द इंटेंसिटी इज टू रिड्यूस डाउन द इंटेंसिटी. सो द उसका अपोजिट क्या होगा? टू इंक्रीज समथिंग. ओके, जिसको आप एंथुजियास्टिक करना है या फिर एक्साइट करना है. आज बहुत पावर कट हो रहा है, यहाँ पर भी बारिश हो रही है जोर से. सो द करेक्ट आंसर हियर इज एग्जैजरबेट. ओके, एग्जैजरबेट. कल ही हमने एग्जैजरबेट का मीनिंग देखा था. वी सॉ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जैजरबेट इन यस्टरडेज क्लास ओनली. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज एग्जैजरबेट. मिटिगेट, पेलिएट एंड सरफिएट, दीज आर ऑल सिनोनिम्स टू दिस वर्ड. ये सारे सिनोनिम्स है. आज 1 बजे नहीं है क्लास. टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज ट्यूसडे वैभवी. So the correct answer is exacerbate, guys. Now the last question. Antonym of hegemony. Antonym of hegemony. Antonym of hegemony. Yes, now this is correct. Importance. Importance is correct. Dominance, supremacy, and imperium. All of these are synonyms of hegemony. ओके, ये तीनों जो है वो हेजेमनी के सिनोनिम्स है. इंपोर्टेंस इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलो, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस क्लास. किसी को कुछ डाउट है इस सेशन में? एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन दिस सेशन?
शाम को हम लोग मिसलेनियस स्टैटिक जीके क्विज करेंगे। ओके, मिसलेनियस स्टैटिक जीके करेंगे हम लोग शाम को 7 PM ऑन यहीं पर ऑन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी कैच। चलो, so before we part ways, guys, telling you about India's biggest weekly scholarship test for CAT aspirants. You can enroll for absolutely free. You can win scholarship from a pool of 55 lakh rupees. Just scan this QR. इस QR को स्कैन करो एनरोल करने के लिए and use this invite code RUSHI रुशि। ओके, एवरी संडे 12 बजे कॉम्बैट होता है and you can win amazing scholarship prizes from Unacademy, guys. Also, check out the CAT Iconic one-on-one live mentorship program. You can speak with the mentor directly, clear a doubt, discuss concepts, discuss exam strategies, build a customized study plan, book slot as per your convenience. Okay, सारा benefit मिलता है आपको CAT के Iconic one-on-one live mentorship program का. So go for the subscription, guys. The 1 year subscription plan goes for 39,500 rupees for Iconic and 22,550 for 1 year of plus. और जो लोग कैट 2022 को टारगेट करेंगे, गो फॉर द 2 year सब्सक्रिप्शन प्लान दैट गोज फॉर 32,800 फॉर आइकॉन फॉर प्लस एंड 59,999 फॉर 2 years of iconic. And do not forget to use this code RUSHI Rushi. That will give an additional 10% discount on all your subscriptions. Okay, thank you everyone for joining me for the session. You guys were absolutely amazing. I will see you 7 p.m. today for the miscellaneous static GK class. Till then, you guys take care. Let's crack it. Bye bye, guys. Have a very good day ahead.